भरपूर तालियां बलोचिस्तान से आए हमारे भाइयों के लिए। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अहम खिताब करेंगे। Now we have a message from the UN Secretary General. He is a great promoter of reform and innovation. His commitment and efforts to fight climate change are commendable. He has declared 2021 as the year to reconcile humanity with nature. Please put your hands together for His Excellency Antonio Guterres. I'm pleased to send greetings to the government and people of Pakistan, official hosts of this year's World Environment Day under the theme Ecosystem Restoration. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We have a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption, and escalating pollution. For too long, humanity has cut down the Earth's forests, polluted its rivers and oceans, and ploughed its grasslands into oblivion. We are ravaging the very ecosystems that underpin our societies. And in doing so, we risk depriving ourselves of the food, water, and resources we need to survive. The degradation of the natural world is already undermining the well-being of 3.2 billion people, or 40% of humanity. Luckily, the Earth is resilient, but she needs our help. We still have time to reverse the damage we have done. That is why, on this World Environment Day, we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, civil society, and private citizens in an unprecedented effort to heal the Earth. By restoring ecosystems, we can drive a transformation that will contribute to the achievement of all the Sustainable Development Goals. The task is monumental. We need to replant and protect our forests. We need to clean up our rivers and seas, and we need to green our cities. Accomplishing these things will not only save the planet's resources, it will create millions of new jobs by 2030, generate returns of over $7 trillion every year, and help eliminate poverty and hunger. The United Nations Decade on Ecosystem Restoration is a global call to action. It will draw together political support, scientific research, and financial muscle to massively scale up restoration. Everyone can contribute. Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. So let today be the start of a new decade, one in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. Thank you, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General. Now moving on, I would like to invite Special Assistant to the Prime Minister of Pakistan on climate change, and under the leadership of Imran Khan, Malik Amin. Aslam has previously championed the flagship Green Growth Initiative for the KP province and now leading the 10 billion tree project for the entire country. भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मलिक अमीन असलम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है दुनिया में कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है. और इस एज़ाज़ के साथ पाकिस्तान आज एक ऐसा डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को ट्रिगर कर रहा है जो कि दुनिया की अगले 10 साल की सिमत को मुतय्यन करेगा. इस अगले 10 साल के अंदर तमाम दुनिया के साइंटिस्ट ये बात कर चुके हैं कि अगर इस अगले 10 साल के अंदर इस दुनिया ने अपनी सिमत को तब्दील ना किया तो फिर शायद इंसानियत खुद खतरे में आ जाएगी. इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ये 10 साल इस दुनिया ने अपनी सिमत तब्दील करनी है और माहौल को अपना दोस्त बना के चलना है. और पाकिस्तान को आज ये एजाज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक मिला कि माहौल के साथ हमने जंग नहीं करनी, माहौल को हमने अपना शरीक बना के और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट को लेके आगे जाना है. और इसी को इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं. और आज हम यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 4 बड़े अहम ऐलानात करना चाहते हैं जो कि दुनिया के लिए हम इंशाल्लाह सामने पेश कर रहे हैं. फिलॉसफी हमारे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की ये है कि हमने
जहां पर नेचर को प्रोटेक्ट करना है वहां पर अपने लोगों का भी ख्याल करना है और उनको जॉब्स दिलवानी है। और अल्लाह के फजल से अभी तक जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें 85,000 जॉब्स दी गई हैं और इंशाल्लाह इस साल हम उसके अंदर 2 लाख जॉब्स का इजाफा करेंगे। और वो 4 इनिशिएटिव्स जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, उसके अंदर आज हम मेजर अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं कि जो 10 बिलियन ट्री का हमारा विजन था उसके अंदर हमने अपना 1 अरब दरख्त पूरा कर लिया है। और आज हम बॉन्ड चैलेंज के तहत 10 लाख हेक्टेयर या 1 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर करने का वादा कर रहे हैं दुनिया के साथ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने अपने ऊपर लिया है। इसका हमें किसी ने नहीं कहा, किसी ने हमें इस पे जोर नहीं लगाया कि आप ये चैलेंज लें। ये चैलेंज हमने अपनी और अपनी नस्लों के लिए लिया है, लेकिन इससे दुनिया को भी फायदा है। इसी तरह और वो हमने रजिस्टर करा दिया है, कल हमें उसकी कंफर्मेशन मिल गई है। दूसरा जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है उसके अंदर हम अपने नेशनल पार्क्स को बढ़ा रहे हैं। जहां पर कोविड के अंदर तमाम दुनिया इस परेशानी में मुब्तला थी कि इसका मुकाबला कैसे करना है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ग्रीन स्टिमुलस लॉन्च कर दिया जिससे लोगों को नौकरियां मिली। नए नेशनल पार्क हमने बनाना शुरू किए और आज हमने पिछले 1 साल के अंदर 15 नए नेशनल पार्क बनाए हैं। और उसके साथ साथ हम नेशनल पार्क सर्विस लॉन्च करने लगे हैं जिसमें ट्रेनिंग मिलेगी आपको 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते की। उसकी एकेडमी हम बलूचिस्तान ज़ियारत में बना रहे हैं और उस ट्रेनिंग के बाद हम 5,000 यूथ को नेशनल पार्क्स के अंदर नौकरी देंगे। अगेन हमने नेचर भी प्रोटेक्ट किया और साथ नौकरियां भी फराहम की हैं। तीसरा हमारा जो इनिशिएटिव है रिचार्ज पाकिस्तान। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा हुआ है और एक नेमत पानी है पाकिस्तान की। यहाँ पर हर साल एक सैलाबी रेला आता है और जो तबाही फेर के चला जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो चला जाता है तो हम पानी को तरस रहे होते हैं। तो उसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमने एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से कॉन्सेप्ट किया है कि रिवर इंडस के लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर 15 ऐसी वेटलैंड्स हैं, ऐसी नेचुरल लेक्स हैं जो कि तबाह हो रही हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन बीच में से पानी गुजर के चला जाता है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम उस सैलाबी रेले को जब वो आएगा तो उसको हम डाइवर्ट करेंगे उन वेटलैंड्स की तरफ। उससे ना सिर्फ वो वेटलैंड जिंदा हो जाएंगी बल्कि जो हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो जिंदा हो जाएगा। ये रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इसके लिए 1 अरब रुपया इस साल मुख्तस किया गया है और 2 पायलट साइट्स के ऊपर हम काम स्टार्ट कर देंगे। और चौथा और आखिरी हमारा इनिशिएटिव ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर है। ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर इस वक्त दुनिया में जिद्दत आ रही है फाइनेंसिंग के ऊपर कि ये जो तमाम बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं इनका पैसा कौन देगा। हमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सिखाया है कि व्हेन यू ड्रीम डोंट वरी अबाउट योर वॉलेट, कि जब आप ख्वाब देखें तो फिर ये ना सोचें कि पैसे कहाँ से आएंगे, आ जाते हैं पैसे। नीयत साफ हो और आपकी कमिटमेंट हो। और हमने यही देखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बिलियन ट्री में भी देखा है और अब 10 बिलियन ट्री में भी देख रहे हैं। लेकिन हमने कुछ जिद्दत हमने भी की और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके जो दुनिया ने 3 बड़े इनिशिएटिव किए हैं। ग्रीन बॉन्ड, वो पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते वापडा ने लॉन्च किया $500 मिलियन का। और जब 500 मिलियन हमने दुनिया से मांगे डॉलर तो दुनिया ने हमें जवाब दिया कि आप 3 अरब ले लें हमसे। ये पाकिस्तान की ग्रीन क्रेडिबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से हुआ है। इसी तरह हमने ब्लू बॉन्ड पहला इंशाल्लाह उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते रिपोर्ट पेश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो ऐसा खजाना है पाकिस्तान के मैंग्रोव्स जो कार्बन बचाते हैं उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है जो तकरीबन आधे $1 अरब के बराबर है। उसको कैपिटलाइज करने के लिए ब्लू बॉन्ड। और फिर तीसरा जो नेचर बॉन्ड जो भी इंगर एंडरसन ने बात की यूनेप की कि नेचर बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसमें जब उन्होंने बात की कि कौन सा मुल्क पायलट करेगा तो सब मुल्क झिझक रहे थे कि पता नहीं क्या चीज़ है। पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया और कहा कि हम पायलट करेंगे दुनिया के लिए। और आज पाकिस्तान के साथ 3 ममालिक की बातचीत चल रही है और इसके अंदर ये होगा कि जो नेचर में आप इन्वेस्ट करेंगे आपको आपकी डेट या कर्जे माफ करके आपको वो पैसे मिलेंगे। तो ये वो जिद्दत है जो पाकिस्तान में हो रही है और इंशाल्लाह ये दुनिया के लिए भी कीमती है और पाकिस्तान के लिए भी कीमती है। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज for Pakistan to be hosting this World Environment Day, which is at the moment streaming live all over the world. And we have a lot of viewership looking at Pakistan to see what Pakistan is doing for the World Environment Day. And our message to the world is that we have trusted in nature.
and nature has paid back to us. And our message is that the world needs to trust in nature, and it is time for nature. Thank you very much. What I loved about Pakistan was its wilderness, its mountains. I would make sure that we preserve this God-given beauty of our country. We started one of the most ambitious campaigns to plant 1 billion trees in 4 years. And against all odds, we did it. So when I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. 30,000 हम लोगों ने पौधे लगाए, 20 खवातीन ने। अब हम लोग खवातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। ये बलोच औरतें जाकर निगरानियां करती हैं, ऊँटों को भगाती हैं, बकरियों को भगाती हैं, उनकी नस्ल जो पौधों की ख़त्म नहीं करती और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहला तिमिर ना परो अब तो पहला कसा न चारता अनु इब्राहिम का नंबर रोजगार है दाता अम्मा जिंदगी भर में शिक्याला भी कनो जैनानी पैगाम आदे हाँ शिमा भी मेहनत करनी शिमा भी पुच्चा दस्ता सिलाई करने करो गरीब क्या गरीब राने मन नाना वरगाऊं मिर्ची आएगी सांगार नहीं है आटा नहीं है जा उसको भी 2 रोटी दो हम लोग खुद गरीब है हमारा दिल अमीर है। जहाँ पे हम लोग मैंगोस की सीडिंग करते हैं, सीडिंग के बाद यहाँ पे एक पौधा ग्रो करता है जो घना जंगल बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की भी प्रोडक्शन होती है, ये फॉरेस्ट की भी प्रोडक्शन होती है। ये फॉरेस्ट फिर बाद में बर्ड्स के लिए भी एक होम टाउन बन जाता है। तो छोटी मछलियाँ यहाँ बड़े समुद्र में चली जाती हैं तो वहाँ पे लोकल माहीगीर के लिए सस्टेनेबल फिशिंग का ज़रिया भी बन जाता है। यहाँ पे मैं ये जंगली जानवर हैं इनकी हिफाजत करता हूँ। मुझे खुशी होता है, मेरा घर भी यहाँ पे है और मेरा ड्यूटी भी यहाँ पे है। मेरा जो जिम्मेदारी है जानवरों की हिफाजत करना, कोई इनका शिकार ना करे, कोई इनको तंग ना करे। इधर नर्सरियों में 5-6 साल से काम कर रही हूँ। मेरे साथ 8-10 लड़कियाँ भी काम करती हैं और इधर से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, अच्छा निज़ाम चलता है। अब मैं खुद 2 यूनिट नर्सरी की मालिक हूँ। We involved the local communities. We first made them understand how important trees were for the future. We involved women in mountainous areas to grow nurseries, and it became one of the most successful campaigns in our country's history. We are honored to have with us the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, His Excellency Mr. Boris Johnson. He has urged the world leaders to step up with the plans for fighting climate change this decade. He is also going to chair the UN Climate Change Conference of the Parties in Glasgow, November this year. Please put your hands together for the Prime Minister of the UK, His Excellency Boris Johnson. On World Environment Day, I know that everybody is still focused on the global pandemic, coronavirus that we've been struggling with. But be in no doubt what this pandemic is. It is Mother Nature's revenge upon humanity for our failure to keep in balance with the natural world. That's what a zoonotic plague like COVID is, jumping the species barrier because of the way we farm wild animals, because of the way we treat the natural world. And that plague is going to be dwarfed by the catastrophic consequences of humanity's failure to combat climate change. Anthropogenic climate change that is driven once again by our actions and our activity. We need to redouble our efforts to control the rise in temperature, to keep it at 1.5 degrees. That means we all have to make massive commitments to transforming our economy and getting back in balance with nature. And I salute what Prime Minister Imran Khan has done in promising to plant, I think, 10 billion trees, or a huge campaign of afforestation already underway. I salute what Imran Khan is doing to replant the mangrove.
Thank you, Prime Minister. There was some technical error. I'll check that. Moving. So we'll move on. It gives us immense pleasure to announce that the President of China, His Excellency Xi Jinping, has shared his message for today's World Environment Day convention. We truly acknowledge his great efforts for bringing everyone together for green development and harmony between man and nature. As they say in China, when people pull together, nothing is too heavy to be lifted. His Excellency Xi Jinping will also be chairing the UN Biodiversity Conference in China this year. I would like to request the Chinese ambassador to Pakistan, His Excellency Norong, to read out the President's message for us. Please put your hands together for the ambassador. His Excellency Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. On this special day, it is my great honor to read the congratulatory message sent by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. Congratulatory message by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. As Pakistan successfully hosts World Environment Day 2021 in Islamabad, I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan, and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies attending this event. In a year that marks the beginning of the UN decade on ecosystem restoration 2021 to 2030, it is highly relevant that Pakistan hosts World Environment Day celebration under the theme of ecosystem restoration. Planet Earth is the one place we all call home. A sound ecosystem is essential for the prosperity of civilization. It is imperative that we respect nature, follow its laws, and protect it. In order to live in harmony with nature, climate change, biodiversity loss, aggravating desertification, and frequent extreme weather events pose serious challenges to the survival and the development of humankind. With the world being a community with a shared future, the international community must demonstrate ambition and take actions like never before to build a fair and equitable system for global environmental governance featuring win-win cooperation, and to promote sustainable development of humankind. The Chinese civilization has long valued harmony between man and nature. The concept of ecological conservation has been incorporated into the overall plan for building socialism with Chinese characteristics. As a participant, contributor, and a pace setter in the global efforts of ecological conservation, China is committed to following multilateralism, defending the UN-centered international system and the international order underpinned by international law, and improving global environmental governance. As the host of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, COP15, later this year, China will discuss with all parties things important to ecological conservation to inject fresh impetus into global environmental governance. The Pakistani government and Prime Minister Imran Khan
have made the Clean Green Pakistan movement a policy priority. China commends Pakistan's commitment and stands ready to work with Pakistan and the rest of the international community to step up cooperation within the UN framework for a community of life for man and nature, and for a clean and beautiful world. I wish the World Environment Day celebration a full success. Xi Jinping, President, the People's Republic of China, 5th June 2021. लगे है शजर तो धरती को मेरी सांस आई है, माहौल दोस्ती मेरे वतन को रास आई है। जो थी बंजर जमी अब सब्ज जंगल पैरहन इसके, हुए आलूदगी से पाक दरियाओ कोहन इसके। कहत से हो की आजादी न ही सैलाब आएंगे, हर एक सू फूलो फल होंगे, परिंदे चहचहाएंगे। चलो मिलकर करें ऐसा, अंधेरा ना रहे बाकी। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है, लेकिन वो आंख चाहिए थी कदर करने वाली कि इन कुदरती वसाइल का ख्याल भी रखें और नेचर की कदर भी करें और इससे फ़ायदा भी उठाएं। तो अल्लामा इकबाल ने इसको एक शेर में तमाम कर दिया है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो दीदावर, वो आँख, वो देखने वाला, कदर करने वाला अल्लाह की नेमतों का और उनसे फ़ायदा उठाने वाला वो लीडर, वो है इमरान खान। और तेरे रंग रंग इतना खूबसूरत है ये पाकिस्तान। तो अबरारुल हक साहब, आप ज़रा आइए, तशरीफ़ लाइए और हमें बताइए कि मौला तेरे कितने रंग हैं, तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया भी बोलूँगा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की टीम का, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की टीम का और फॉरेस्ट गार्ड्स का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ये जो वीडियो अभी आपने देखी थी उसकी तैयारी पर हमारी जो डिजिटल मीडिया विंग है, हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके पुरजोर तालियों में वेलकम कीजिएगा अबरारुल हक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारकबाद। एक सेकंड के लिए इसको अगर बंद कर दें। वज़ीर आज़म साहब, मैं ये सोच रहा था कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हमें एक ऐसा लीडर मिला जो जनरेशन्स की सोच रहा है, जो सैलाब रोकने की सोच रहा है, एकोसिस्टम की सोच रहा है। और मुझे वो लोग भी याद आ रहे थे जो सैलाब में लॉन्ग शूज़ पहन के उस वक्त सिर्फ तस्वीर खिंचवाते थे। अल्लाह ताला उम्मीद है ऐसा विजन बरकरार रखेगा और ऐसे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। और आज दुनिया में जो इज़्ज़त मिली है पाकिस्तान को कि हम होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस तरह के और बहुत सारे डेज होस्ट करने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ योर विजन इंशाल्लाह। थैंक यू।